Azim, you're a mixture of everything. Yes. Every bit. तो ये कैसे हुआ? I think your mom and dad की वजह से हुआ. अच्छा. I don't know what they did, but I think growing up, the cultural, I think my mom being an architect and being raised in New York, and I traveled a lot. You traveled a lot. Okay. I think my जो भी बचपन की memories है मुझे वो जहाज़ की हैं. Milk वहाँ, lunches, dinners, changing मेरी वहाँ होती थी. My mom traveling all over the world, New York से London, Morocco. So you're the lucky one then. So I think, and this cultural factor, इतना देख के and I started, I think at a young age, picking up different cultures, concept. मेरी जो palate थी, the things I eat, even they're just very different. Like I can कहीं भी adjust हो सकता हूँ. आप कहीं भी मुझे भेज दें, मुझे taste buds जो हैं वो develop हो गए. मेरा style adjust हो जाएगा, मैं adjust हो जाता हूँ. अच्छा, tell me something. Do you agree? Because ये हम पढ़ते हैं, सुनते हैं. When you're well traveled, तो आप बहुत ज़्यादा differently सोचने लग जाते हैं. Definitely. Your way of thinking, your way of your perceptions, everything changes. Definitely. Is that true? That is 120% true because आपका एक understanding हो जाती है. That I think people think अगर आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, people do not realize कि दीवार के उस साइड भी कुछ है. पर जो नजर आ रहा है वो ही है. But when you travel, you see different cultures. जो चीज़ आपको सही नहीं लगती, बेशक आप वो ना कर, एक टॉलरेंस लेवल भी हो जाता है. यू सी कि यहाँ ये एक्सेप्टेबल है, यहाँ ये आप एक रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो, and you learn so much from a very creative point of view, so many things. Yeah, but I think हम जो यहाँ बात करें, it's वो privileged लोग हैं जो बहुत travel करते हैं, and they can travel and they can learn. But I tell you something, आप अपने ही शहर में रह के बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं. When you sit with new people, you get to know so many things and you learn a lot. Absolutely. But I'm going to learn something from you today. Vice versa. And you're going to learn something maybe from Vice versa, definitely. From me. But the whole point is कि हमें लगे कि शायद हम बड़ी ऐसी बातें करें क्योंकि लोग तो फौरन आपको तो ट्रोलिंग का आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. What's new? Criticism आपको आराम से. And I'm really impressed by you. The way you are so composed and the way you take the criticism, it's so like अच्छी एक लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि वो सीखें. I do criticism मैंने कभी personal नहीं लिया है. मैं कभी भी शुरुआत में ऐसी कोई चीज़ें होती थी जो unfair थी, जो बोली जाती थी, because अगर आपको मेरे बारे में कहना, speak about me, do not use other people, do not involve them. For instance, who? When they would call me a woman and make it look negative, do not insult women. If you have a problem with me, मुझे को मेरा कोई अंदाज पसंद नहीं है. But indirectly बोलना, oh ये तो लड़की, as if being a woman is bad. My mother is a woman. I'm sitting with a woman. She's hosting the show. A lot of female officers. Do not disrespect women. I do not support that. Absolutely. Or any other gender for that matter. मुझसे मसला है, say it to me. So वो चीज़ें तंग करती थी. उसके अलावा, I never took it personally क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं, वो जो भी होए, नंबर 1 ये उनका राइट है. आप जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो, आप एक ओपन अपॉर्चुनिटी देते हो पब्लिक को कि आपके बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले. Being in public eye was my decision. तो कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. I have to accept that. But I disagree. No, for me personally. आपको लगता होगा, but what I believe कि nobody has a right to say anything. They don't have a right. अगर हम पब्लिक में नहीं आ रहे या हम अपने लिए भी काम कर रहे हैं और आपके लिए भी कर रहे हैं, I'm bringing a show to you. He's doing a lot for the citizens. So why do we have to criticize? But that's the thing. We need to understand that's how the world is. That's why I don't take it personally. And number 2, these people, which are, and in general, they do not know me personally. They don't know you. हमें थोड़ी देर के लिए देखेंगे, तस्वीरों में देखेंगे. So they might have a judgment, and that is completely fine. Bless you, but they don't know us personally. बिल्कुल. So उनकी सोच में अगर ये है, all good, fair. Okay.